everyone, welcome to cooking site. Today I am going to make how we can make bread pastry cake, which is very easy to make. We just need only two ingredients: bread slice and just whipping cream. तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड पेस्ट्री केक के साथ। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम। इसको हम बीट करेंगे, विस्क से अच्छे से बीट करेंगे। वी विल बीट द क्रीम एंड वी विल ऐड सम आइसिंग शुगर। अब हम थोड़ा आइसिंग शुगर डालेंगे, यानी कि शुगर पाउडर, एंड वी विल कीप कंटिन्यू बीटिंग। See, our cream is already beaten, and now we need a bread slice and we'll apply some sugar syrup डालेंगे और अब हम इसमें क्रीम को अप्लाई करेंगे लेयर बाय लेयर, एक एक लेयर करके। और फिर से शुगर सिरप डालेंगे। we'll add some sugar syrup more and whipping cream again and keep continue. and one more layer. तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Layer is done. Now we'll finishing with final touch. अब हम इसको फिनिशिंग करेंगे। And now we'll drop some strawberry jam puree on all the edges. अब हम स्ट्रॉबेरी जो हमने जाम की प्योरी बनाई है उसको हम किनारे किनारे में ड्रॉप करेंगे एक एक करके गार्निश के लिए, और आपका केक बिल्कुल एकदम बहुत ही सुंदर दिखेगा। द केक विल बी लाइक सो प्रीटी as you can see. Very simple, very easy to make. You can make in home very easy if you have just only sliced bread and cream.
Now we'll garnish with fresh strawberry and berries. As you can see, अब हम इसको स्ट्रॉबेरी से गार्निश करेंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा दिख रहा है केक, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही कमाल का केक बना है। खाली 10 से 15 मिनट में बन जाएगा आपका केक। तो दोस्तों, अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।